Hi everyone, I hope all of you are absolutely fine and doing well in your studies. I'm also good and my studies are also going well. So today I'll be sharing a basic and a common book list which is followed by almost every topper and aspirants. And if you're planning to start your preparation, you can start with these sources. And before starting, I want to suggest you one thing, that to adapt a simplicity in your preparation in everything. आप अपनी प्रिपरेशन को जितना सिंपल रखोगे ना उतना ही इंजॉय करोगे एंड चीज़ें उतनी स्मूथ जाएंगी. एंड अगर आप कॉम्प्लेक्सिटी लेके आओगे ना तो इट विल बी प्रॉब्लमैटिक फॉर यू एंड यू विल फाइंड डिफिकल्टीज एवरी नाउ एंड देन एंड चीज़ें ना डे बाई डे आपके लिए बहुत हार्ड और कंफ्यूजिंग बनती जाएंगी. So if you want to avoid all these things, you have to have a simplicity in your preparation. So now let's start with the book list. When I have started my preparation, the books with which I began my journey were the NCERTs, and these books cover major portion of my list till now. So I'll start with geography because it's my favorite subject and I love reading geography. सबसे पहले ये एटलस मैप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. जोग्राफी कवर करने के लिए आपको मैप का सहारा हर वक्त लेना पड़ेगा. किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ना अगर आप मैप से समझते हैं तो इट विल बी मच ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट टॉपिक. एंड इन दिस एटलस all the maps are included, every bit location is covered. Then coming on 11th and 12th NCERT books of geography. First is this Fundamentals of Physical Geography. This is the first book with which you have to start your geography, and in this book every major concept is covered. Second is India Physical Environment. Third is India People and Economy. Fourth is Fundamentals of Human Geography. Start with these NCERTs, and if you're not able to understand it, go and try reading 6th, 7th and 8th NCERT of geography. That will make you understand the things better. Next list is of history. The first book is Ancient India by R. S. Sharma. Second is Medieval India by Satish Chandra, and third is Modern India by Bipin Chandra. After that, there is another book for Modern India, that is Spectrum. So you have to go with one of these two options, and I'm personally following Spectrum. Follow single sources for every subject, or otherwise if you're following multiple sources, you will be in a trap. एंड आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, माइंड में रिटेन नहीं रहेगा और हमेशा एक कन्फ्यूजन रहेगा कि ये सोर्स अच्छा है या वो सोर्स अच्छा है या वो सोर्स अच्छा है. इसीलिए आप जितना लिमिटेड रखोगे ना चीज़ों को उतनी ईजी एंड सिंपल रहेंगी थिंग्स. देन फॉर आर्ट एंड कल्चर यू कैन स्टार्ट विद एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट्स. Now here the list is of polity. You can start with 11th NCERT Indian Constitution at Work, and then you can read the book Political Theory. And after that Lakshmikant, this is the standard book also known as Bible of Polity for every UPSC aspirant, and these are the only source of polity which I'm following. Then I have books of economy. First one is Indian Economic Development, which is 11th NCERT, and this is must to read book. After this you can read 12th NCERT of Macroeconomics, and ये मेरी 12th की वही सेम बुक है इसलिए मुझे इसे परचेज नहीं करना पड़ा, ऑलरेडी मेरे पास अवेलेबल थी. Then as a standard source of economy I'm following Sanjeev Verma. On my personal experience I can say that this is an amazing book. If you completed making your base and planning to move on a standard book, you can definitely go with this. I'll come up with a review book also. Please wait for few days. 11th and 12th की NCERT एक बार ख़त्म करने के बाद you can start with Mrunal sir's lecture of economy. As you all know, it's recommended by almost every topper. Actually, it's one-stop solution of all your economics doubt, as their lectures are best for covering UPSC syllabus of economy, because things are explained in a simple and easy to understand language, and that is the thing which is required to understand the things in a better way. For covering society part, you can go with this 4 NCERTs. Almost everything is covered in this book. Just ignore the part of thinkers because it's not relevant for GS. You know why NCERTs are recommended by everyone? Because these are the books which have basic to advanced level of a content of our syllabus. The language is simple to understand. There are few words which you will not be able to understand. For that you can simply search on Google. You will get the meaning. And जब आप किसी चीज़ को स्टार्ट करते हो ना तो आप सिंपल चीज़ों के साथ स्टार्ट करते हो. जब आप स्कूल जाना स्टार्ट किए होगे तो आपने ABCD से स्टार्ट किया होगा, देन वर्ड्स आए होंगे, सेंटेंसेस आए होंगे, ग्रामर्स आए होंगे, एंड देन उसके बाद आपने अच्छे से रीड करना स्टार्ट किया होगा. In the same way, NCERTs are ABCD for us. And if you're not able to purchase the NCERT book due to any reason, you can simply download the NCERT app from Play Store. All the books are available on this app. You can simply download it and you can read it offline also. One more plus point of this app is that it has AIR news on front page only. वो भी आपको यहीं से मिल जाएगा, तो कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है. Coming back on why NCERTs. And other thing is that everything is at one place. ये चीज़ आपको पहली या दूसरी रीडिंग में समझ में नहीं आएगा. जब आप उसकी मल्टीपल टाइम्स रीड करोगे ना
तो हर एक बार में आप कुछ ना नया एक्सप्लोर करोगे अपनी एनसीईआरटी बुक्स में से, एंड यू विल फील अमेज्ड कि ये टॉपिक भी यहाँ पे ही कवर है इसमें। एंड नेक्स्ट थिंग इज अबाउट दोज ब्यूटीफुल क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज में कई क्वेश्चंस आपको ऐसे मिल जाते हैं ना जिसको आपने अगर एक बार सॉल्व किया है तो यू कैन इजीली राइट दैट सेम क्वेश्चन इन योर एग्जाम्स विद अ लिटिल बिट ऑफ एडवांस प्रिपरेशन। अब इसके इतने सारे बेनिफिट्स होंगे तो कोई कैसे आपको रिकमेंड ना करे। अबव ऑल दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अबाउट एंजॉइंग द प्रोसेस। इफ यू लव दिस जर्नी, एक अलग ही एक्साइटमेंट, एक अलग ही मजा होगा हर दिन आप जब स्टडी स्टार्ट करोगे, वरना ये प्रिपरेशन ना आपके लिए सिर्फ और सिर्फ बर्डन बन करके रह जाएगी और फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। जो भी करना है ना, एंजॉय करके करना शुरू करो, यू विल नोटिस द चेंज आफ्टरवर्ड। मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया है, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ। आई होप इट हैड हेल्प यू। इफ यू फाइंड दिस वीडियो वर्थ ऑफ योर लाइक एंड सब्सक्राइब, प्लीज डू दैट। If you have to purchase any of the book, link is given in the description box. You can check it out from there. So this was it for today. Thanks for watching. Bye bye. Take care of yourself. See you soon in my upcoming vlogs. Till that time, keep smiling and keep shining.